So see this. So this one. So is the some person who are living in this country, but they are not the part of it because they are the foreigners. So they still cannot be counted as a full citizens. Means they don't have the right to vote. सर Yes. इसको लिखना है फेयर कॉपी में। इसको लिख सकते हैं आप चाहे। सर एक बार ये बता दीजिए सर, ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 13 वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन का मतलब? वही तो बता रहे थे, तुम बड़े अजीब व्यक्ति हो, तुम बताते थे, तुम कैसे करते हो उस समय। कौन गाना बजा रहा है? ये हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये हम कहना चाहते हैं कि जो लोग 30 की उम्र के होते थे, 30 के पार होते तो महिलाओं को छोड़कर they are counted as a full citizens, and if they counted as a full citizens they have the right to vote. Yes, and still those person who are living in the country, they are also past the age of 30, but they are not basically original of that place. They don't have the right to vote. Clear? Yes, sir. So this lesson is ended. Yes, sir. Yes sir. So yes. Sir. Yes. सर फॉरेनर मतलब? विदेशी जो बाहर Yes, sir. जो आपके देश का नहीं है, तो आपके देश के ही व्यक्ति को तो वोट डालने का अधिकार है, जो बाहर का है विदेशी Yes. का अधिकार है। So that's answer. Clear? Yes sir. चलिए। Yes, सर कहिए। सर हाँ सर हाँ कहिए ना भाई, सुन रहे हैं आपको। हेलो हाँ सर। कहते हो भैया, तो वो जो BUDDH उसके बाद क्या लिखा है? ये इसमें नो सर, ये BUDDH उसके बाद सर वो क्या लिखा है? ये बुद्ध लिखा है। ये जो कोई भी है भाई, क्या कहें इसको? शिवम प्रजापति है। बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, बुद्ध के बारे में जानते हैं? सर उनकी सारनाथ में मूर्ति भी है सर। Yes, sir. ठीक है, सर हम देखे हैं। हाँ Yes, तुम sir. सब। ओके ठीक है ना ये? सर अजात शत्रु का तो शिवम प्रजापति है। सर वही कभी से गाना बजा रहा है। यस सर। छोड़ दीजिए इसको। आजाद। एक बार लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताइए। लॉर्ड बुद्धा के बारे में अभी नहीं बता सकते, कारण ये है क्योंकि आगे आने वाले लेसन में क्यों आप सर? लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई अर्लियर Yes, sir. it will take the another time, because once I will tell about the Lord Buddha is a very famous person who started a new religion, and this new religion started with Buddhism. So Buddha started this religion, so that's why the ideas and the philosophy which was given by the Lord Buddha is a part of Buddhism. Clear? जैसे लॉर्ड महावीर है, तो लॉर्ड महावीरा who has given the philosophies and the ideas and the teachings. So the person who followed the teachings and the ideas and the philosophy, they are known as Jains. 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 सर वो अपने मुंह में हिंदी स्टडी से करते रहते हैं ना? One by one ask. Yes. कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था जेंट्स के बारे में?
चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं लेसन नंबर 1. चलिए. Yes, sir. It's okay because mostly our Yes, syllabus is sir. completed. So today I will start that. Now I will ask and you will give the answer. Now the time has changed. You will become the sir or the ma'am, and I am become right now the student, and I want to listen what you are teaching to me. Now tell me. So we have completed this lesson. So still, Yes, sir. listen. Yes, sir. If you still have any doubt regarding with this word, you can ask. इसमें किसी भी शब्द से Yes, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, so he or she can ask. Tell me. Yes. Tell me. सर अब तो आवाज नहीं आ रहा है. पूछिए. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. बच्चे ने कह दिया कि हाँ तो रहा है. what, where, how and when. So start with सर अब तो वीडियो नहीं आ रहा है. आ रहा है अब. Not coming video. यस सर. Good. ऐसा है कि जब हमारी साउंड नहीं आती है और हमको लगता है हम व्हाइट बोर्ड से थोड़ी देर के लिए भी साइड होते हैं, तो आपको लगता है वीडियो नहीं आ रहा है. ऐसा है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं. आई विल आस्क. सर क्या कहाँ कैसे और तब. वेरी गुड. Sir. चेयर लेकर आओ. ये चेयर लेकर आओ. Sir. यस. वो चमक रहा है ब्लैक बोर्ड पे. सर क्या, कब और वो लाइट कहाँ? वो लाइट है, बंद कर दीजिए लाइट. उसका स्विच थोड़ा बाहर से है, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा. सर इसका मतलब सर क्या, कहाँ और कब? यस. सर क्या कहाँ करते और तब. चलिए. Starting with this, कहाँ, कैसे और. my first question, यस that how many students are still reading the newspaper right now? कमी. Just raise the hands. सर क्या. Just कमी. raise the I hands. will read it. नो सर फिर से बोलिए सर, सुनाई नहीं दिया. मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? चलिए बस हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा. रेज द हैंड्स. If they are reading the newspaper, it's a very good. And those who are not reading, try to make the habit of Sir, it. I will read. अगर देखिए ये कंपलसरी इसलिए नहीं कर रहे हैं, मे बी द सम स्टूडेंट्स इन देयर इस समय हम लोग नहीं पढ़ रहे और हैं इन देयर हाउसेस. कोरोना के नहीं पढ़ रहे हैं सर. Yes, yes. Or maybe in the some of the houses, the newspaper will not come. So I can't force that you have to buy and read. But reading newspaper is a good habit. My house newspaper is come. Now listen once. Now my question. So those who are reading the newspaper, have you ever thought or have you ever think that when the first newspaper was published in India, or the which newspaper was published? सर अब तो आवाज तड़ रहा है. No, sir. नो सर. उसे कहने दीजिए, वो उसकी उसने अपना वो बना रखा है, वो बार बार यही कहेगा.
Tell me. Which was the first newspaper in India? The first newspaper which was established in India. अमर उजाला, वाह, दैनिक जागरण, एक बच्चा कह रहा है अमर उजाला और एक बच्चा कह रहा है दैनिक जागरण. हिंदुस्तान, No, Bengal Gazette was दैनिक जागरण, Bengal Gazette was the first newspaper तेलुगु, which was established. Gazette. Yes, no. Because the name was Bengal Gazette, this newspaper was published in English. Clear? So this one is the Sir, this first. was English language Yes, it was. newspaper. Earlier newspaper was published in English because on the newspaper the censorship right which is taken by the Britishers. So earlier the Britishers read this newspaper and Sir, after, Culture was and after reading published in 1779. 19 Sir, Culture newspaper. this newspaper 1779. सॉरी 1979 नहीं है, बहुत पहले का है. 1979 तो अभी का है. न्यूज़पेपर आज ही No, तो थोड़ी चल रहा है. sir, 1979 नहीं बोले हैं. 1779 बोले हैं. नहीं, बहुत पहले हो गया. उसके बहुत बाद के 19th century में है, near about 1870 or 1878, around this period. Yes. सर, अरे भाई बोलो. सुन लिए, बोलिए. फर्स्ट न्यूज़पेपर का क्या नाम है? न्यूज़पेपर के तो बहुत सारे नाम हैं. जिस मैंने न्यूज़पेपर का नाम दैनिक लिखा है जागरण, बंगाल गैजेट नाम है. हिंदुस्तान, तेलुगु, पंजाबी, कौन है ये? It is of India. I am not talking about the world history. Because this year we have to read about the Indian history. Clear? And all the 3 years we have to discuss about the Indian history. Now, Acha. So, in this lesson we have to know about the past things. So, first of all, start this. For in this first lesson, we have to read about the which history. The history consists of everything. The history. History. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now listen. So we have to read about the history of, first of all, hunters. So hunters, then the another history, herders, and the history of farmers, rulers. Farmers, rulers, merchants, priest, merchant, priest, then craftsperson, then artist, musicians, and scientists. One main thing, that maybe we will not find out the history of everything in this book.
or maybe earlier also, later also. But when we started our period from the, it's a part of prehistory. We will found the evidences, and on the basis of this, we are guessing how the hunter-gatherers live. Shikari, they are the Akhetak. In Hindi it is known as Akhetak, or is related with Shikari. Shikar karte the, as well as is also what? Hunting, and they will do the two activities, hunting and gathering. And the gathering of the crops, and also gathering, if they hunt the animals, they will also gather the animals. Next one, herders. Clear? समझ में आ रहा है सब बच्चे को? Because again we are starting and reading this. ठीक है? सर एक बार और यस सर समझ में आ रहा है। ऐसा है कि हंटर का मतलब होता है शिकारी। तो हम जब इतिहास की शुरुआत करते हैं, so at that time we have to read about the prehistory part, and in the prehistory part we have to read about what? We have to read about, now see this, it is not a full page, see this here, prehistory. सर प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था ना? Yes, in the prehistory we don't have written records. So when we talk about the written records, थर्ड हिस्ट्री में आप क्या लिखे हैं? सब बता रहे हैं, एक मिनट देखते जाइए। कौन सा हिस्ट्री? थर्ड हिस्ट्री, थर्ड हिस्ट्री में आप क्या लिखे हैं? हम बता रहे हैं, थर्ड हिस्ट्री में फार्मर्स है, थर्ड हिस्ट्री में फार्मर्स है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, सो थर्ड हिस्ट्री में फार्मर्स है, और when we talk about the prehistory, so prehistory we don't have written records, are not available. So on the basis of artifacts, 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 we decided in which condition they live. Clear? So they are doing the hunting and gathering work. The next one is herders. The next one is herders. In the lesson number 4 or 5, Yes, we have discussed about, as well as when we talk about the hunting and gatherers, when the early men before to starting what cultivation for some time, or we can say in the previous method, he was also the herder. Herder means a person who tame the animals. एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को पालता है. And later the mixed process of cultivation and the herding, it is known as mixed farming. कि वो खेती बाड़ी भी करता था. चरवाहा, yes. तो चरवाहा खेती बाड़ी भी करते हैं. So this one. यस सर. So this one. Clear? सर मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोलते थे? Mixed farming is a process in which two activities are indulged, and indulged activities are farming as well as taming the animals. Herding, yes. Taming the animals, जानवरों को. सर टेमिंग द एनिमल्स यानी कि डोमेस्टिकेशन. Yes, domestication. So domestication of animals, and domestication is not related with the animals which are mild to man, not wild. ये नहीं कि शेर को पाल लिया. So
those animals which are helpful for early man. So they will tame or domesticate those animals. Clear? So it's a part of herding and the history of herders. And later, still the process is still going on, because most of the tribes still today's are living on these conditions. They are the herders. They are moving from always. They are always on the move. Herder means grazers, charvahe. So they will also always on the move. Because if you see some tribes, सर so yes, अमल लगा के उसमें लिखे ना कि सर पहले मैं आप लिखवाए तो उसके बाद क्वामा लगवा के लिखवाए हार्डर सर जो क्वामा के बाद जो दूसरे हिस्ट्री में आता है ना ये जान लीजिए कि इस लेसन के अंदर सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है इस पहले लेसन में कि ये समझ लीजिए कि ये लेसन जो आपका पूरा बताएगा कि इस बुक में हमको पढ़ना क्या है, तो उसको प्रीफेस कह सकते हैं, जिसको विषय सूची कह सकते हैं. सो इन दिस होल बुक वी विल रीड अबाउट द what kinds of history. Example, we have read about the hunting and gatherers in the shape of early man. We have also read about the herders. We'll also read about the farmers. We'll also read about the rulers. Even we also known about the merchant in the Mahajanpada, the rise of Mahajans. Then the priest class, how the priest class involved in the sacrifices. Then craft persons are also available in the urban areas. Artists, musicians we don't have read. So two things we don't have read about. But the musicians are also available in the ruler's court. And the scientists at that time, in the earlier time, when you talk about the ancient India, at that time, there was not too much science developed, but time to time, when they built the grand palaces and the many more things, the science involved. Clear? So today the time will over. yes, sir. Tomorrow we'll Sir, again talk slide. about on this matter. Clear? Tell me. yes sir clear चलिए. So the class will over. Thank you. thank you sir